Supriya Sule ji. Thank you, sir, for giving me a chance to speak on the 193 on price rise. I appreciate all the points made by my several colleagues because it's a very, very important issue. And endlessly everybody has repeatedly talked about सुषमा जी यहाँ खड़ी होके महंगाई पे जब चर्चा करते थे हम वहाँ बैठते थे। अभी भी मुझे याद है उनका एक एक शब्द तब का कि तभी महंगाई पे हम पे टीका टिप्पणी जो करती थी बहुत शांति थी, हम सुनते थे क्योंकि हमको लगता था वो कुछ फीडबैक दे और हमेशा उनके भाषण में कुछ सुझाव होते थे और हम उनके सुझाव सुनते थे और उन पर अमल करने की कोशिश भी हमारी यूपीए की सरकार करती थी। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहाँ बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला तो मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं। बहू भी शादी होके जब घर आती है ना तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं समझता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। मेरी दोस्त और सहकारी कनिमोजी जी ने एक बच्चे के बारे में बोला, वो बात सही है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ इस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत एक पेंसिल के लिए और किसके लिए कि जो पढ़ाई हम देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब, लेकिन किस किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये जीएसटी के मामले में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके जीएसटी के हम जब बच्चे थे सर हमको ये सिखाया गया था दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्त दत्ता दत्ताची गाय मतलब दत्तक की गाय, गाईचं दूध गाय का दूध, दूधाची साय दूध पे जो साय आती है ना वो, साईचं दही मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीचं ताक तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी बटर और लोण्याचं तूप मतलब घी। तो ये दत्त दत्त दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है? नहीं, भगवान पे अभी तक नहीं लगाया है। आप सोचिए पनीर, कर्ड, लस्सी, जैगरी, शुगर, नेचुरल, पफ्ड राइस, मुरमुरा हमारे सारे कलकत्ते के दोस्त कब से बोल रहे हैं उसके बारे में, मूरी के बारे में, राइस, व्हीट, टेंडर कोकोनट, राइस फ्लावर, और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है। ये आपकी सोच है? सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। तो जीएसटी के बारे में और एक बार इनका जवाब जब आएगा तो कहेंगे जीएसटी काउंसिल ने किया, हर मंत्री स्टेट्स ने किया है।
ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ और खट टेबल भी कर सकती हूँ सर कि महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इन्होंने तोड़ी नहीं थी, अच्छे से चल रही थी। सो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं क्या? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनानिमसली होती है, अगर नहीं होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए, क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजॉरिटी इनकी है, एक बड़ा बहाना हो गया। डिमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहती हूँ। निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल में ये पॉलिसी गलत हुई, ठीक है, बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई, यही तो इसीलिए यहाँ है, नहीं तो वहां बैठे रहते, शायद हुई भी होगी गलती हमारे से। जो काम करता है सर वो गलती करता ही है, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई। लेकिन आप सोचिए, डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, किसी ने, पहले मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन मैं सिर्फ टिप्पणी कर रही हूँ छोटी सी इस पे, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला। The Bangladesh today is an export, remittance and agriculture driven economy and we were doing well together. क्या हुआ? Demonetization हो गया, उसके बाद क्या हुआ? India grew at 3.7 and Bangladesh grew at 8.2 and the only reason was demonetization। और क्या पाया? मैं दोहराना नहीं चाहती जो मेरे पहले वक्ता बोले हैं, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है। You are absolutely right when you talked about it. I want to even ask the Honorable Finance Minister about how much money is in circulation. The CIC, he has quoted a lot of numbers. Anybody who knows, I'm not a finance expert, nor am I an economist, but this much little I know in finance, that whenever you overprint money, which is probably the right thing when you need it because you wanted to rise demand, so you needed to bring in the cash. I appreciate that. But everybody knows whenever you print extra notes, it leads to inflation. It's a very common economic knowledge. You don't need to be very smart for that. So in that case, when you are looking at reducing monies, why did you print so many notes? And what is the exact amount in circulation? Because here at one level, you keep telling people to go to banks. I want to just bring this to your knowledge very quickly, that you are encouraging people to going to the banks, which is welcome. We've all worked very hard to make sure everybody in our constituency all goes to the bank. सर आपको पता है खर्चा कितना होता है? अगर आप ATM विड्रॉल करें तो पता है कितने बार? Many banks allow up to 5 free transactions. So every time you, after the 5th time in some banks, आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़े, खुद के पैसे निकालने के लिए। व्हाइट का पैसा जो इन पे विश्वास रखे आप बैंक में रख रहे हैं, वो खुद का पैसा निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है। डेबिट कार्ड एनुअल फी, now what is the debit card annual fee? 99 to 75, और बेचारे का घूम गया कहीं हो सकता है उसको 200 रुपया उस पर और देना पड़ेगा अगर नया कार्ड बनाओ। बैंक स्टेटमेंट जो हक का अपना है, आपको प्रिंट चाहिए तो 50 या 100 रुपया। मनी ट्रांसफर टू RGTS, मनी ट्रांसफर टू NEFT, सर्विस चार्जेस ऑफ बेसिक बैंक, cash withdrawal from bank, checkbook charges. So at the rate we are going, only like that guy का दत्ता का problem, bank में भी वही problem है. Only going and getting out of the bank is free. Rest you have to pay for everything you have to pay. So I really want to ask this government, what is their thinking? Nishikant ji talked extensively about LPG. I just want to ask him one small question. I won't repeat all the points my earlier colleagues have said. But he said that the price was the same. But he forgot to mention that the government was paying the subsidy that time. The UPA government never let the cylinder go about 300 and 400. So where is this magic number of 1,000 that he's creating from? Yes. Only he knows, maybe we'll get a reply for it. Somebody talked about the falling rupee. I still remember Sushma ji, and it had pained me, so I'd like to quote her here. जैसे जैसे currency गिरती है, वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है. So last just two small questions I want to ask her. I just want to ask her two very small questions. He talked about this cess question. I've never got a reply from this government. This government charges cess
for primary education, secondary education, health, GST compensation, additional excess. So much cess gets collected. There are 12 ways you collect cess. Why don't you give this to the poor consumer? I think we need to, they deserve to do it. They talked about two very small points I want to just ask about this U-turn of this government. The government talked about wheat. So just literally last 2-3 points. That's all. In short, 2 points. I'll club it together, sir. This government made a policy. He talked about wheat. Now, what did this government do about wheat? उन्होंने एक दिन wheat policy की कि आप लोग बेच सकते. Within 3 days, there was a U-turn on that policy. There is complete ban. Why? एक बार आप कहते you have enough reserves. So when 2 rupees extra is going into the farmer's kitty, then why have you stopped? One side, is there, I want to ask this government, will you give me a white paper on doubling income? The other day, a mantri from here is saying, "Arey, dugna ho gaya, dugna ho gaya." Yes, you tell us Supriya ji, how it please is now dugna ho gaya. And last one point only. Sir, this solar energy, now they are saying GST. Now they keep saying that they have a complete kitty of coal, hydrogen, everything together, and it's going to be a green government. By 2030, they want to get rid of petrol, they want to get 20, it's only 8 years, sir. That's the commitment this government is doing. And when this solar energy, they're taxing everything at 18%. So, I mean, is the poor Prime Minister, who has a great vision, is confused by his own ministers? The policy that one Mantralaya is doing and the other Mantralaya is doing, they're misleading the Prime Minister of this country. Because in his speech, he keeps telling us that he's going to make sure that it's a green country, it's a safe country, it's going to be an affordable country to live in, while all his each departments comes with a different story. Please. So I'm really concerned as what he says and what happens in reality are two different. But मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एक महिला वित्त मंत्री है आज, वो पीड़ा जानती है. इन्होंने सिर्फ प्याज का बोला, क्योंकि प्याज इज द मोस्ट, इन्होंने ऐसा ही बहुत चतुर है, इसलिए सिर्फ प्याज के दाम के बारे में बोला, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है. थैंक यू. आप पेट आंकड़ों से नहीं भरता सर, पेट के लिए और गरीब आदमी को धान लगता है. मुझे सिर्फ विनती है वित्त मंत्री सी कि आप एक महिला है, आप घर चलाती है. आपके एक बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मुझे बोला था घर जाइए, मुझे बोला था, आपको नहीं, कि आप I thank आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, हम दोनों प्रोफेशनल भी है. Nothing is going on. Supriya ji, nothing is going on record, please. Yes, ma'am. Margani. Sir, I thank government for having brought this burning issue of price rises for discussion, sir. Sir, if it would have done earlier, the House wouldn't have stalled this many days, and we would have had very good discussions in the House. Sir, one more thing, sir. I would like to add value-added points here, sir. Sir, as we are people's representatives, we are very much familiar with the perils faced by the common man, sir. Due to the rise of prices like cooking gas and pulses, grains, groceries, and so on, sir, of course, we understand despite of pandemic and the war between Ukraine and Russia has affected and impacted the whole world, sir. But it shall be our priority to reduce the impact of the inflation in the shortest time possible, sir. Sir, we all know that the common man every day necessaries like cooking gas. And as I said earlier, it has shot up the prices in this March 2022, shaking the monthly budget of the common man, sir. Sir, for instance, I would like to quote here, sir, the cooking gas has shot up the price by 25%, sir. Sir, how come the common man can survive on this? Sir, I would like to read out the analysis of the Department of Economic and Policy Research in RBI, sir. Sir, the output losses of first pandemic year is around about 19.1 lakh crores. And then the second pandemic year, it was around about 17.1 lakh crores. And the 22-23 losses projected is around about 16.4 lakh crores. And if you look at the GDP, sir, the GDP growth, it came down from 8.9%, and it is projected to come down to 7%, sir. Sir, how come
and how come it may, I think government need to focus more, and as per the analysis given, sir, the losses of the COVID and the GDP, to overcome this, sir, it will take up till 2034 to 35. So what is the government taking the measures to curtail the price rises, sir? Sir, the government should more focus on the alternate source of fuel, sir. Sir, I would like to highlight some of the issues, some of the imports here, sir. Sir, as per the statistics given, sir, the imports of the crude oil is around about $170 billion, sir, which is 30% of our total imports, sir. And especially the precious metals like gold and the precious gems, it is around about $88 billion, sir. It is around about 15% of our imports. So in a way, sir, the totally it indicates around about $570 billion, sir. And the Indian rupee is dropped by 13.5% against the US dollar recently, sir. So how can we overcome all this? So I would like to give some of the fine suggestions here, sir. Sir, the government should more focus on alternative source of fuel. Sir, I'll give you an example here of hydroelectric power stations, sir, like 3 gorgeous dams in China. It produces around about 22,500 megawatts of power, and it says around about 110 billion units per day, sir. So how much power it is been producing for the consumption of the total China, sir? So likewise, the Atal Bihari ji, the Honorable former Prime Minister, has conceived and dreamt of interlinking projects, and in that we can create a big dams so that we can generate more power. In fact, our country, the Honorable Prime Minister is also planning for the alternate source of powers, as Supriya Sule ji has rightly mentioned here. By 2030, we are going to curtail the petrol and diesel. So how come it has been possible in a span of 8 years? The government should more focus on that, sir. Sir, and one more thing I would like to add here, sir. Sir, as our country is an agrarian country, since the independence of 75 years of independence, our country is more into the agriculture products. Sir, even still today, we are the major importers of the palm oil, the edible oils. And the duty of the import is much higher. Because of this, the war crisis, the edible oil has skyrocketed. So the government need to promote the local edible oils like coconut and mustard, and also to reduce the import duties for this edible oil, sir. And also, sir, our farmers are really, and even though the government has given a lot of incentives for the fertilizers, sir, and subsidy is offered by the government, sir, but even still, the fertilizers prices have creeped up and have skyrocketed, sir. Sir, we need to ensure sir, we have more time, sir, at least 3 more minutes. Sir, we need to ensure the farmers. The total time allotted is only just 2 hours. Total time allotted for the discussion. Sir, here the number is 22, sir. Please at least 5 minutes has to be allotted. No, you continue, but don't please claim any time. Okay. Sorry. There's a fair suggestion. As per the speaker's direction, it is 2 hours, and each party's time is well enunciated here. That's why. Yes, you continue, sir. But please. Sir, yeah, I'll confine, sir. Sir, we need to ensure the farmers. Sir, we need to ensure the farmers with the preventive measures to earn more profits, sir. Sir, I also suggest here, sir, that MSP should also be revised to keep the pace with the inflation, sir. Sir, the government should more focus and encourage the farmers with the alternative crops, sir. So we've been importing cotton, we've been importing the finished goods of cotton, even edible oils.
So instead of that, we need to encourage our farmers to produce more what we are importing from the other countries, sir. Sir, I'll give you some suggestions here, sir. The unpredictable monsoons have been one of the major factors for the inflation also, sir. Sir, here to keep it intact, diversify to alternative crops and encourage farmers with incentives, and the rainwater harvesting, reuse of organic waste, desalination of water, so on, sir. And the government should more focus on the free trade agreements for stabilizing the export and import, sir. India has seen the notable positives from FTA in the recent past, sir, as the data shows a significant increase in the exports to some countries, sir. So in that way, as I said earlier, so government should more focus on alternative fuels, yes, and the government should make the common man live with the limited budgets what they have, sir. So in this, the long-term plan, the government should focus in the coming couple of years, should take preventive measures to control this. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Sri Uday Pratap Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आज लंबे समय के बाद ये सदन दोबारा से अपनी गति से चालू हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का और पूरे सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरा हिंदुस्तान बहुत आस भरी उम्मीदों के साथ हमको यहां भेजता है इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए, उनके निर्णय कराने के लिए। महंगाई पर आज सभापति महोदय यहां पर चर्चा स्थापित की गई है और आदरणीय मनीष तिवारी जी और विपक्ष में हमारी बैठी कनी मोदी जी वगैरह ने बड़े महत्वपूर्ण चीजें सामने रखी। मुझे लगता है महंगाई के ऊपर चर्चा करने के पहले हमको कई चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ी हैं, मैं अगर शब्द लगा रहा हूं, अगर बढ़ी हैं तो उनके पीछे कारण क्या है? भारत में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो उसके प्रभाव कैसे हैं? कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने कदम क्या उठाए? कोविड-19 महामारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, 2.5 वर्ष 3 वर्ष पूरा संघर्ष किया पूरी दुनिया ने, उसने क्या प्रभाव छोड़े? रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद पूरी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ रहा है? चीन जो एक अपनी आंतरिक व्यवस्था के साथ संघर्ष कर रहा है और वहां पर जो मांग और पूर्ति का जो एक असंतुलन हुआ है और बाहर से मांग जो बढ़ी है, उसके कारण दूसरे देशों से जो निर्यात की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे कि वस्तुओं की कमी आने के कारण जो कीमतों में वृद्धि हुई है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मनीष तिवारी जी ने कहा था कि हमने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर उनको ले गए थे और माननीय मोदी जी की सरकार में वो दोबारा से गरीब हो गए। कनी मोदी जी ने कहा कि देश में गरीब बहुत संकट में है, 300 रुपए उसको मजदूरी मिलती है और उसका घर नहीं चल रहा। मनीष तिवारी जी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में 92 पूंजीपतियों के पास जितना धन है उतना 55 करोड़ लोगों के पास, गरीब लोगों के पास। मैं सभापति जी ये बात इसलिए कह रहा हूं, यही सब कारण तो है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी इतने संजीदगी के साथ इस देश को बनाने में लगे। अगर ये सब कारण नहीं रहे होते तो मोदी जी ने ये नारा क्यों दिया होता? सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। सबको समान करना है, गरीब को ऊपर ले जाने का काम करना है, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग की तरफ ले जाना है। यही चुनौतियां तो थी जब तो प्रधानमंत्री ने इन चीजों को सामने रखकर एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको रखा और काम करना चालू किया। हम कैसे भूल सकते हैं कि लॉकडाउन के समय पूरे दुनिया में हर चीज की जो आवश्यकता थी उसको पूर्ति असंभव थी। उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को घर घर भेजने का काम किया और हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं
कि लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों से पूरी दुनिया जूझ रही। आज कम से कम हम स्थिति में हैं कि सामान्य रूप से इस देश को हम चला पा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपनी सरकार और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। लगभग हर हमारे स्पीकर ने, सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पैनिक नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में एक साथ 8 से 10 रुपए लीटर की छूट का ऐलान एक दिन में क्यों करते? उनको इस बात की चिंता थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं ना कहीं हमारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को कहीं चुनौती के रूप में सामने आ रहा, तभी तो उन्होंने एक साथ इसको कम करने का काम किया था, हमारी शुल्क कम करने का काम किया था। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भाजपा शासित राज्यों ने भी उस समय 2 से 2.5 रुपए लीटर के हमारे दाम कम करने का काम किया था। किसने मना किया था कि पश्चिम बंगाल में दाम कम नहीं करना? किसने कहा था कि राजस्थान में ड्यूटी कम नहीं करना? आज भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो जयपुर के अंदर मिल रहा है। उसमें सरकार किसकी है ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपीए के 10 सालों में हम 70 साल का हिसाब नहीं मांग रहे, हम 10 वर्षों में यूपीए के अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी बढ़ने की दर थी 116%। उसकी तरफ शायद अतीत में ये अध्ययन नहीं करना चाहते या उसको जानबूझकर सदन के सामने नहीं रखना चाहते। और हमारी एनडीए सरकार में अभी 7 साढ़े 7 वर्ष में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो दर है उसकी बढ़ने की गति जो है वो 16 से 17% है केवल। 116% और 16 से 17%। ये मेरे आंकड़े नहीं, मैं अर्थशास्त्र का व्यक्ति नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन अपने अध्ययन आंशिक ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूं कि ये बातें पब्लिक डोमेन में है, सब लोगों के सामने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, अगर पेट्रोल और डीजल की इतनी चिंता है और जैसा अभी हमारे विपक्षी दल के कई सदस्यों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आड़ में वित्त मंत्री जी चीजों को छिपाने का काम करती हैं, तो एक बार अच्छे मन से जाएं जीएसटी काउंसिल में और वह प्रस्ताव रखें कि इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी के दायरे में लाना है। और भारत सरकार जो जिस तरह जीएसटी का वितरण राज्यों को राज्यवार करती है, उस तरह से जीएसटी से प्राप्त पैसे को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पैसे को पूरे देश में समान दर से वितरित किया जाएगा। ये तय क्यों नहीं कर लेते कि पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल करें? जो राज्यवार कालाबाजारी होती है, एक राज्य में कीमत ज्यादा है दूसरे में कम है, उस कालाबाजारी से भी मुक्ति मिलेगी। और जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं महंगाई के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उससे भी मुक्ति मिलेगी। देश में आधे में अगर हम हैं राज्यों में सरकार, तो आधे में विपक्षियों की सरकारें भी हैं। ये कठिन निर्णय है, क्यों नहीं करते अगर विपक्षी दलों की इतनी चिंता है देशवासियों की? तो माननीय सभापति महोदय, मुद्रास्फीति की बात हमारे कई साथियों ने करी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति अगर हम बहुत पुराने समय के आंकड़े निकालते हैं और आज माननीय मोदी जी की सरकार तक अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो 1973 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के समय अगर 16.9 मुद्रास्फीति की दर थी, 74 में 28.6 थी और 91 में आकर 14% थी। और फिर जब माने हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय जाने वाली थी, उस समय मुद्रास्फीति की दर 11.6 थी। जो बाद में प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली 2013-14 में, तो घटकर 6.67 आ गई और 2018-19 में तो 3.9 थी। कोविड के समय पूरी दुनिया जब संघर्ष कर रही थी, ये दर हमारी बढ़ी है, 6.8 हुई है। और आरबीआई का मानना है आज की तारीख में कि अगर ये 5.5 के आसपास रहती है तो एक आइडियल दर इसको हम मानते हैं, जिस पर हमारी सरकार कर रही है। लगभग उसी के आसपास ये सरकार इस दर को नियंत्रित करने का काम कर रही है। मैं जो आंशिक महंगाई है उसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में जब अव्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना देश को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। लेकिन सरकार उसके क्या कर रही है, सरकार उसकी किन चीजों में चिंता कर रही है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आज स्टील की बात करी, स्टील और प्लास्टिक उद्योग में अब कच्चे माल पर आयात शुल्क में अगर कमी सरकार ने की है तो किस वजह से की कि महंगा स्टील इस देश में ना मिले।
स्टील सही दरों पर मिले, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गरीब जिसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उसको सही दाम पर स्टील मिले, इसके कारण ही तो आयात शुल्क में कमी की है। और आज आप पूरा देश देख रहा है कि स्टील में लगातार कीमतों में गिरावट आई है और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी आने के बाद में हम फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज स्टील के जो उत्पाद हैं, उत्पादों के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया गया है जिससे चीजें बाहर न जाएं, हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान में रहे। आयात शुल्क में कमी की है। खाद्य तेलों में चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन का कच्चा तेल और सूर्यमुखी के कच्चे तेल को शुल्क मुक्त अनुमति प्रदान की है आयात को। तो यह इसलिए की है कि तेलों के दाम न बढ़े। आज उज्ज्वला गैस की हम बात करते हैं माननीय सभापति महोदय, उज्ज्वला गैस अगर गैस में लग रहा है कि इसकी दर महंगी है, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की राज्य सहायता देने का काम किया। अगर इसके दाम ठीक होते तो राज्य सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री को चिंता हुई तभी उन्होंने राज्य सहायता यहां पर प्रदान की। और जब यूपीए 2 में हम लोग यहां बैठते थे, अधीर रंजन जी आपको याद होगा कि उस समय इस बात के लिए संघर्ष होता था कि एक साल में सरकार ने घोषणा की कि हम 6 से 8 सिलेंडर देंगे और जिद्दोजहद से सदन में चलती थी कि एक 6 से 8 नहीं, आप 12 सिलेंडर दीजिए। आखिर अचानक क्या हुआ कि यूपीए 2 में सिलेंडर की संख्या की बात करते थे और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस बैरियर को खत्म किया है और पूरे हिंदुस्तान में जब जिसको जितना सिलेंडर लगे वो उपयोग कर सकता है। और इसके साथ 9 करोड़ उन गरीब महिलाओं के घर के चूल्हे में फ्री में गैस का सिलेंडर कनेक्शन भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। एक तरफ सिलेंडरों की संख्या हम बताते थे और आज असीमित 9 करोड़ महिलाओं को। और सबसे महत्वपूर्ण सभापति महोदय, अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो महिलाएं छूट गई, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जो लेकिन गरीब परिस्थिति की है, उनको लगता है इन पेपर्स के कारण उनको गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी 1 करोड़ महिलाओं के लिए कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ वो कहें कि मैं गरीब परिस्थिति की हूं, मुझे इसकी आवश्यकता है सहायता की, 1 करोड़ महिलाओं के लिए अलग से ये प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री जी का। सभापति महोदय, सरकार चीनी की महंगाई की बात कर रहे हैं। चीनी के निर्यात के संबंध में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 100 लाख टन की सीमा निर्धारित की है। यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्टूबर में जब चीनी का सीजन शुरू होगा तो 3 महीने की खपत को कवर करने के लिए सरकार के पास भंडारण रहे। 100 लाख टन की कैपिंग हमारी सरकार ने की है। यह केवल इसलिए कि इन कीमतों को नियंत्रित हम कर सकें। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमतों को कम करने के लिए गेहूं के निर्यात पर हमने प्रतिबंध लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त सरकार किसानों को उर्वरक पर 1,10,000 करोड़ की अतिरिक्त राज्य सहायता देने के लिए सरकार ने तैयारी की है। अगर सरकार चिंतित नहीं होती, देश की 65 से 70% आबादी किसानों की है। सरकार उन 65% आबादी की चिंता के कारण सरकार ने जो निर्णय लिए, आप देखिए 2011-12 में जो समर्थन मूल्य था हिंदुस्तान में चने का 2800 रुपए था। आज मोदी जी की सरकार ने उस समर्थन मूल्य को 2800 से बढ़ाकर 5200 रुपए अगर किया है, उसी 65% की आबादी की चिंता के कारण तो किया है। आज मसूर का 2011-12 में 2700 रुपए समर्थन मूल्य था। तो समर्थन मूल्य की बात करते हैं, 70 सालों में समर्थन मूल्य 2700 रुपए मसूर का पहुंचा था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल 2021-22 में उसको 5300 रुपीस पर लाकर खड़ा किया है। लगभग दुगने के बराबर समर्थन मूल्य को भेजा है। अरहर 3000 रुपए समर्थन मूल्य था 2011-12 में, आज 7000 रुपए के आसपास है। लोग गरीब की थाली से दाल गायब होने की बात करते हैं। वो 65% आबादी इस देश की जो मूंग का उत्पादन करती है किसान की, उसके समर्थन मूल्य को 3000 रुपए से 7300 रुपए 7300 अगर किसी ने किया है तो हमारी एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान का जो अनाज महंगा होता है, ये कई बार मीडिया के मित्रों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, जैसे ही अनाज महंगा होता है इस देश में एक साथ आवाज आती है कि कोई कहता है गरीब के घर से आटा गायब, कोई कहता है किसान अपना गरीब की थाली से आपकी दाल गायब। मैं आग्रह करना चाहता हूं, जब 65% आबादी उत्पादक है इस देश की, किसान, छोटा किसान, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, अब आई एम ओनली सेकंड स्पीकर सर।
मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देश की 65% आबादी जब खेती पर निर्भर करती है, 65% आबादी किसानी पर निर्भर है, तो उसका अनाज अगर महंगा होता है तो इसमें हमारे पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? ये क्यों चिंता का विषय? किसान की जेब में पैसा जाएगा, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, किसान की जेब में पैसा जाता है, वो वही पैसा निकल के बाजार में जाता है, उसी पैसे से स्टील खरीदता है आदमी, उसी पैसे से दालें खरीदेगा, उसी पैसे से आटा आएगा, उसी किसान के पास जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसको मजदूरी के माध्यम से पैसा जाएगा, सरकार के मनरेगा के माध्यम से पैसा जाएगा। जब बाजार में पैसे का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, अगर बाजार में पैसा घूमता रहेगा तो आंशिक महंगाई भी व्यक्ति के लिए चुनौती नहीं होती अगर उसके पास पैसा है। और सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, किसी भी सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सड़क बनती है, सड़क बनेगी, व्यापारी का स्टील बिकेगा, सड़क बनेगी, प्रधानमंत्री आवास बनेगा, सीमेंट उद्योग चलेगा, वो चलेगा तो हमारे कारपेंटर को काम मिलेगा, बिजली का सामान बिकेगा, कलर बिकेगा, मजदूरी मिलेगी। मतलब कितनी चीजें हैं जो इस रुपए के पीछे चलती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम अगर हमारी सरकार ने किया है तो आम आदमी की, किसान की, जरूरतमंद की, गरीब के पास पैसे की कमी ना हो, बाजार में पैसा चलता रहे। इस चुनौती को सरकार ने अगर सहजता से पार किया है तो मैं उसके लिए भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चुनौती थी 2013-14 के बाद इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की। इस चुनौती को अगर सफलतापूर्वक किसी ने पूरा किया है, हमारे देश के जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। आज हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। जबकि दूसरी सरकारें चल रही हैं, आप देख रहे हैं, कहीं 50 करोड़ जब्त हो रहे हैं, कहीं 100 करोड़ जब्त हो रहे हैं, कहीं गाड़ी में एक करोड़ रुपए गाड़ी के अंदर, हम गाड़ी में 5,000 रुपए रख के ले जाने में सोचते हैं क्या करेंगे, कार्ड है उसका उपयोग कर लेंगे। लोग 50-50 लाख रुपए लेके गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं। ये चुनौती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को घर देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण इस देश में उस गरीब के पास, बड़ा आदमी अपना मकान, अपनी जमीन उसके अंदर मॉर्गेज करके बैंक से पैसा ले सकता था, संपत्ति अपना रख के कर्ज ले सकता था, लेकिन गरीब के पास इस तरह का कोई कागज नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को जिस जगह पर वो रह रहा है उसको भू अधिकार देने का काम किया है, और उस अधिकार पत्र को भी बैंक में वो रहन रख सकता है, बैंक में रख के पैसा उठा सकता है। इसको भी एक बड़े मदद के रूप में इस देश में हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए की है। किसान को एमएसपी दी है, सम्मान निधि दी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अति निम्न वर्ग है जिसके लिए लोग चिंता कर रहे हैं। आप केवल भाषण देते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी, फुटपाथ पर काम करने की विपरीत परिस्थितियों में अगर महंगाई बढ़ी है, कोविड के कारण अगर देश में थोड़ा बहुत ये कुप्रबंधन हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को भी सीधी मदद करने का अगर काम किसी ने किया है, हमारे देश की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आज आयुष्मान अगर लाए, देश में अगर गरीब की चिंता नहीं होती, गरीब के पास पैसे की कमी है, इसीलिए तो आयुष्मान लेकर आए। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, सबसे बड़ा मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम अगर किसी ने दिया है, हमारे हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज आयुष्मान से करोड़ों लोग इस देश के कवर हुए हैं। नौजवान की चिंता करते हैं माननीय सभापति महोदय, नौजवान की चिंता है, इसलिए तो स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप जो नौकरी के लिए नौजवान भागता था, स्टार्टअप के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार काम करी। भाजपा शासित राज्य जो है, मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की आपके सामने 1 मिनट के अंदर रखना चाहता हूं। हमारे राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारे किसी साथी ने बात की थी, हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर 1,20,000 रुपए की एफडी कराते हैं। बेटी की शिक्षा फ्री है, 10th के पास उसको गाड़ी देते हैं, 12th के बाद में उसको स्कूटी देते हैं। बिटिया अगर मेडिकल पढ़ने जाए, किसी भी क्षेत्र पढ़ने जाए, उसको उसकी फीस जमा करने का काम सरकार करती है। उसके विवाह में 52,000 रुपए 51,000 रुपए खर्च करने का काम करती है। बिटिया प्रेग्नेंट होती है तब उसे देने का हम काम करते हैं। वो बच्चे को जनती है, उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद माँ को लड्डू खाने को मिले, इस बात के लिए सरकार पैसा देती है। जन्म से मृत्यु तक मदद करने वाली हमारी सरकारें हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं यह आग्रह कर रहा हूं। साथ ही अंत में कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार गरीबों की, किसानों की मदद की है। मैं सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। हमारी सरकार का जो निम्न मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, वो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। वो निम्न मध्यम वर्ग जिस दिन इस देश में
आर्थिक रूप से एक Yes. व्यवस्थित चलने लगेगा, मुझे लगता है कि हमारी चुनौती खत्म हो जाएगी, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इस समय उम्मीद रखता है सरकारों से। मैं भी इस सदन के बाद आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में हमारे इस निम्न मध्यम वर्ग के साथियों की तरफ से भी हम उनको भी और राहत देने का काम करेंगे, जिस तरह से गरीब और किसान की हमने मदद की है। अंत में ये कहते हुए हमारे मोदी जी का मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी को जो देश के लिए चिंता है, मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूं। अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, मोदी जी जो सोचते हैं देश के लिए, क्या सोचते हैं? तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मोदी जी की जो सब भावना है, तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का ही नहीं, मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, तेरी फिक्र का भी है, देश की फिक्र का, तेरी श्री कल्याण बनर्जी। Thank you, the Honorable Chairman. Sir, you being a member of Parliament, you maintain records very well so far the parliamentary proceeding is concerned. At least more than me. Everybody knows about that. During 15 Lok Sabha to 17 Lok Sabha, nearly 70 times, directly or indirectly, we discussed about price rising, price hiking, and at Rajya Sabha 11 times on this subject. But the central government is incapable to arrest such price hiking during this 3 reasons, 15th, 16th and 17th Lok Sabha. Sir, I was hearing this speech. One honorable member was telling that because of COVID, the price hiking is there. May I ask these questions to this House? Before COVID, whether price hiking was not there in the country itself? Inflation has not been increased here. What did you do? Now another alibi has come. The alibi is Ukraine and Russian battle. That's why the world market has gone down. This price hiking is there. Okay. Before Ukraine and Russia's battle began, was there not price hiking? Why did you not say? आपने कोई कभी नहीं बोला ये देश का ऑल वर्ल्ड में सब देश का साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा देश अच्छा चलता है। आप तो नहीं बोला, आप बोला हमारा नरेंद्र मोदी के लिए देश अच्छा चला, कभी तो नहीं बोला। अभी आप बोल रहे हैं क्या? यूक्रेन एंड दिस रशियन बैटल्स फाइट, दिस मार्केट इकोनॉमी, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन। कभी तो आप नहीं बोला वो सब, ना एलिबाई लेके आ रहा है। सर, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट्स टू फोकस सपोर्ट packages to those most in need to avoid triggering recession. It is a fact that out of 130 crore people, over 97 crore Indians, or about 71% of the country's population, are unable to afford nutritious food in our country itself. All limits of price rise have been crossed. When government imposed GST of packaged food items like milk, dahi, lassi, chuda, muri, paneer and other nutritional food items, which has seriously affected the intake of the consumer. India has become top world milk producer as minimum profit sector in the country. But this policy will soon help big players to enter into the sector, which will adversely affect small dairy farmers of the country. Milk consumers are price conscious, and milk with muri, chuda, sattu and milk products are essential consumables. The government should roll back of the decision. Due to 12% of the GST on condensed milk, butter, ghee and cheese, the wholesale inflation
for milk product rises at 20.33% in June 2022 against 6.96% in 2021. Rising food prices have become painful to us, where 42% of household incomes are spent on food in India. India's wholesale price inflation also runs at 30-year high. 30 years. 2021-2022 has become the year with the highest average yearly wholesale price increase in the past decade at 13%. All records have crossed. हमारा 70 बरस, उसका 70 बरस छोड़ दीजिए उसको. अभी देश का आदमी का क्या हो रहा है ये देखिए. Much of this increase is driven by fuel prices, which accounted for 25% of the jump in wholesale prices. Prices for manufactured products contributing 60% to the wholesale price index. Sir, I will give just few details, just few items. Rate of inflation. That's the commodity items that we every day all we use. Inflation rate in June 2021. Primary articles was 8.59%. Inflation rate June 2022, it has increased to 19.22%. Cereals, it was minus 2.77% in June 2021. It has increased to 7.99% in the month of June 2022. Wheat, it was minus 1.77% in the month of June 2021. In the month of June 2022, it has increased to 10.34%. Vegetables, it was minus 0.78% in June 2021. COVID ka time mein kamti tha. It has increased. Now, 56.7% of the vegetables. Potato, somebody was talking about tomato. First see potato, then you see tomato. Potato, minus 31.09% in the month of June 2021. It has increased to 39.38%. Fruits, in the month of June 2021, 6.96%. It has increased 20.33% in the June 2022. Fuel and power, most important now, 29.32% in the month of June 2021. Now it has increased to 40.38%. Cement, lime, plaster, 2.13%. It has increased to 9.16%. As per NSO, the consumer food price inflation for rural area was 3.9% in March 2021. It went up to 8.04% in March 2022. Similarly, in this CPI inflation for rural India has gone up to 7.66% in 2022 from 4.61% in March 2022. Your years, 2 years. Just see, within 1 year where it has gone, how much it has been increased. Poor or rural households in general are actually not getting food within their expenditure basket due to high prices, which is a sign of deep distress, particularly among the poor population. Rural inflation was recorded at 7.09% in June, while urban inflation was at 6.92%. Sir, value of average annual food expenditure for household across India has risen from 24,615 in 2014-15 to rupees 28 to 8,017 2020-21. 2014-15 आपने आया, हम लोग कोई नहीं आया. That time it was 28,870. Now it has increased to 33,610. This is not due to rise in income, but due to price rises of food items during the period. Sir, a recent report has said that fastest economic growth rate
has trickled down to an average Indian household. Indian economy is facing stagnation, which means the unemployment and inflation belong same time continuously high. High inflation has come on the back of higher food and beverage prices. Data analysis shows food and beverage circulate contribute 43,000 to inflation year on year, 119% in a month to month. So the wholesale price index based on inflation rose to an 8-year high of 7.3% in March and is elevated to 7.8% higher on food. Fuel prices. Food prices, which comprises about half of the inflation basket, accelerated 7.75% in June, while fuel and electricity prices went up to 10.39% from a year ago. Sir, Supriya Sule ji was telling very correctly that regarding the bank account transaction, when Ravi Shankar ji was the minister, he thought about the digital India. Modi ji also thought about the digital India. For bank transaction, we are paying. We are paying. Just lift the veil. Just lift the veil and then you can see how the money is squeezing from the general people at large. If you take checkbook now, you have to pay GST. You have to pay GST. This is the correct picture has been shown. I am thankful to Madam Supriya Sule that she has pointed out first. This has happened. Now, everyone is talking about this banking system in online banking, online banking. Whose profit it is? For whose benefit? Consumers or bank itself? This is the question now has come for consideration. Yes. Sir, I will just finish. In case of subsidized LPG, direct benefit transfer of domestic LPG was rupees 22,726 crore in 2019-20, which came to rupees 6,658 crore in 2020-21. I do not want to burden. Please leave the I do not want to burden with more statistics. What I am on. Leave the What statistics. I am on, sir, I am not on statistics now. Sir, I have an appeal. I have an appeal to each everyone. This is discussions we are taking place. I have given you this statistics. More statistics will come next month. Another statistics will come. Some arguments will be there from there. Some points will be taken from there. We will also criticize. But ultimately, who are the sufferer in this country itself? Ultimately, who are suffering? These poor pupils are suffering. What you are doing? अरे सिर्फ रोने के लिए कुछ नहीं, काम नहीं होता है. आगे बढ़ रहा है देश, आगे कहाँ बढ़ रहा है? You are a member of parliament. You have seen. You have gone to the rural places. I go to the rural places. My 4 constituencies, extremely rural areas. You have given the gas cylinders. You have given the cook ovens. What are they doing? Subsidies are not there. Now they are not using. Not these poor women are not using gas cylinder, gas ovens, nothing. It has been kept in the almirah. Now they are using all this again coke and the wooden things for making their. Yes, Kalyanji. Now continue. Thank you, sir. No, I am lucky that whenever I speak, you are there. Thank you very much. Thank you. Yes, Madam Jyoti Mani ji. Sir, my time is running Yes, out. you please. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களுக்கு வணக்கம். விலைவாசி உயர்வு தொடர்பான விவாதத்தில் பங்கேற்க என்னை அனுமதித்தமைக்கு நன்றி. நான் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வருகிறேன். எங்கள் குடும்பத்திற்கு 10 ஏக்கர் தரிசு நிலமும் ஒரு கிராமத்து வீடும் உள்ளது. மழை பெஞ்சா அங்க ஏதாவது விளையும். மழை பெய்யல அப்படின்னா அது ஒரு வானம் பார்த்த வறுமையான பூமி. ஆடுனா ஒரு 20 ஆடு மேய்க்கலாம். அந்த 20 ஆடு மேய்க்கிற வருமானம் தான் ஒரு விவசாய குடும்பத்திற்கு மிச்சமாகும்.
ஒரு விவசாய குடும்பத்திற்கு இந்த நிலைமைனா ஒரு விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் வெறும் 100 நாள் வேலையை நம்பி மட்டும்தான் இந்த ஆட்சியில் இருக்காங்க. அவர்களுடைய கஷ்ட காலத்தில் ஒரு தேவதையாக வந்து அவர்களை காப்பாற்றுவது 100 நாள் மகாத்மா காந்தி 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம். அதற்காக அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களுக்கு இந்த தேசம் நன்றி சொல்கிறது. எங்கள் மக்களின் சார்பாக நான் இங்கே அதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன். இதுதான் எங்க ஊருடைய நிலைமை, எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியுடைய நிலைமை, எனது தமிழ்நாட்டின் நிலைமை. உங்கள் ஆட்சியில் இந்தியாவின் நிலைமை இதுதான். விவசாயத்திற்கும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கும் உங்கள் ஆட்சியில் ஆதரவில்லை. வெறும் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கும் பெருமுதலாளிகளுக்கும் கைகட்டி உங்கள் அரசாங்கம் சேவகம் செய்கிறது. அண்டை நாடான இலங்கைக்கு சென்று மின்சார ஒப்பந்தத்தை இந்தியாவில் உள்ள உங்கள் நண்பரான கார்ப்பரேட்டுகளுக்கே கொடுக்க வேண்டும் என்று பேரம் பேசுகிறது. இந்தியாவில் வேற எந்த பிரதமரும் இப்படி வெளிநாட்டிற்கு சென்று வெளிப்படையாக பேரம் பேசியதாக வரலாறு கிடையாது. இதனால் இலங்கை அரசியலில் ஒரு புயல் அடித்து ஓய்ந்திருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு துளி கூட வெட்கமில்லை. விமான நிலையங்கள், துறைமுகங்கள், மின்சார ஒப்பந்தங்கள், ஊடகங்கள் முதல் 5G அலைக்கற்றை வரை உங்கள் நண்பர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த 8 ஆண்டுகளில் உங்கள் நண்பர்களில் ஒருவரான அதானி இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, ஆசியாவில் மட்டுமல்ல, உலகிலேயே 4வது பெரிய பணக்காரராகிவிட்டார். இப்படியான அற்புதங்கள் நடக்கும் உங்கள் நல்லாட்சியை நாங்கள் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வரிசைகள் நின்று வாழ்த்து பாடாமல் எதிர்த்து நின்று சாதாரண மக்களுக்காக, விலைவாசி உயர்வுக்காக, கொடுங்கோன்மையான GST வரிக்காக போராட்டம் நடத்துகிறோம். பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு, சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வுக்காக போராடுகிறோம் என்று பொங்கி எழுகிறீர்கள். உங்கள் கோபம் நாடாளுமன்றத்திற்குள்ளே போராடி கொண்டிருக்கும் எங்களை நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே அனுப்பி வேடிக்கை பார்க்கிறது. சில புள்ளி விவரங்களை உங்கள் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அரிசி ரூபாய் 26, பாஜக ஆட்சியில் 36, கோதுமை 20, இங்கே 30, துவரம்பருப்பு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 69, பாஜக ஆட்சியில் 101, உளுந்தம்பருப்பு 65, 103, கடலை எண்ணெய் 122, மோடி ஆட்சியில் 184, கடுகு எண்ணெய் 95, மோடி ஆட்சியில் 183, வனஸ்பதி 73, உங்கள் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும் ஆட்சியில் 160, சூரியகாந்தி எண்ணெய் 96, உங்கள் ஆட்சியில் 188, பாமாயில் ஏழை எளிய மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் ஒரு சமையல் எண்ணெய் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 74, உங்கள் ஆட்சியில் 156. இந்த விலை உயர்வில் உங்கள் பெரிய மனது திருப்தி அடையவில்லை. அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய், பால், தயிர், மருத்துவமனையில் அறைகள், அவசர சிகிச்சை பிரிவு, ஏன் மின்மயானம் வரை 5% கொடுமையான GST வரியை நீங்கள் விதித்திருக்கிறீர்கள். பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் ஒரு பொருள். ஒரு ஏழை தாய் 100 நாள் வேலையை மட்டுமே நம்பி இருக்கின்ற ஒரு ஏழை தாய் பாலுக்கு கூட 5% GST வரி போட்டா அவங்க எப்படி குழந்தைக்கு பால் வாங்கி ஊத்துவான்னு கொஞ்சமாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு நிதியமைச்சர், அதுவும் அவர்கள் ஒரு பெண் என்பதற்காக அவர்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் ஆண்களை விட கூடுதலாக சென்சிட்டிவிட்டி இருக்க வேண்டிய ஒரு நிதியமைச்சர் பாலுக்கு போய் வரி போடலாமா? அரிசிக்கு போய் வரி போடலாமா? பருப்புக்கு போய் வரி போடலாமா? சாதாரண மக்கள் இங்கே எப்படி வாழ முடியும்? கல்விக்கு, பென்சிலுக்கு, ஒரு ஏழை எளிய குடும்பத்திற்கு ஒரு கல்விதான் எதிர்காலம். கல்விதான் அவர்கள் வரலாற்றை மாற்றி எழுகிறது. கல்விதான் அவர்களை சமூக ஒடுக்குமுறையிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது. அப்படி கட்ட கல்வி கூட கற்க முடியாமல் பென்சிலுக்கு கூட வரி போடுகிறீர்களே, உங்களுக்கு எல்லாம் மனச்சாட்சியே கிடையாதா? ஏழை எளிய மக்கள் அனைவருமே அரசாங்க மருத்துவமனையிலேயே வைத்தியம் செய்து விட முடியுமா? மருத்துவம் பார்த்து விட முடியுமா? அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போக மாட்டார்களா? அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனால் அந்த மருத்துவமனை அறைக்கும் கூட 5% வரி போடுகிற ஒரு ஆட்சி ஆங்கில ஆட்சியை விட ஒரு கொடுமையான ஆட்சி என்பதை உங்களுக்கு புரியவில்லையா? மின்மயானம், எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கரூர்ல ஒரு தனியார் மின்மயானம் இருக்கு. அதுக்கு 600 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த 600 ரூபாயை கூட கொடுக்க முடியாமல் இறந்த மனிதர்களின் உடலை வைத்துக் கொண்டு அழுதவர்களை பார்த்து கலங்கி போய் நின்று என்னால் முடிந்த உதவி செய்திருக்கிறேன். ஆனால் அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாம் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் இது கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு கைகட்டி சேவம் செய்கிற ஒரு ஆட்சி. இந்தியாவில் பிறந்தது முதல் இறந்தது வரை வரி போடுகிற ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறது என்றால் அது நரேந்திர மோடியின் அரசாங்கமாகத்தான் இருக்கும். இந்த பிறந்தாலும் சரி, இறந்தாலும் சரி, இறந்த பிறகும் கூட ஒரு மனிதர் ஒருவருடைய வாழ்வு நிம்மதியாக இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிற ஒரு கொடுங்கோன்மை உங்களுடையது என்று குற்றம் சாட்டுகிறேன். கேஸ் சிலிண்டர் விலை காங்கிரஸ் ஆட்சியில 410 ரூபாய், உங்களோட அச்சேதன் ஆட்சியில 1100 ரூபாய். 2 கோடி பேர் நாங்க எல்லாரும் சிலிண்டர் கொடுத்தோம்னு சொல்றீங்க. சிலிண்டர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில், மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் இலவச சிலிண்டர் துவங்கி வைக்கப்பட்டது. இன்னைக்கு நீங்க சிலிண்டர் கொடுத்தோம்னு சொல்றவங்கல்ல 2 கோடி பேர் ஒரு வருஷமா ஒரு சிலிண்டர் கூட புக் பண்ணல. அவங்க முன்ன மாதிரி விறகுக்கே போறாங்க. அப்ப பெண்களுடைய கண் பார்வை பாதிக்கப்படுகிறது, அவர்களுடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்படுகிறது. அது மட்டும் உங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் நாங்க போராடணும். 1052 ரூபாய் சிலிண்டர் அப்படின்னு நாங்க பதாகை உயர்த்தினா அதை குற்றம் என்று நீங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள். அடுத்து பெட்ரோல் டீசல். காங்கிரஸ் ஆட்சியில 2014-15
72,160 கோடி ரூபாய் வரி, பெட்ரோலுக்கு 29,279 கோடி ரூபாய், டீசலுக்கு 42,881 கோடி ரூபாய். உங்கள் பகல் கொள்ளை ஆட்சியில் 3,92,000 கோடி ரூபாய் வரி, டீசலுக்கு 1,21,073 ரூபாய், பெட்ரோலுக்கு 2,70,270 கோடி ரூபாய். இது பகல் கொள்ளை இல்லாம வேற என்ன? கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? காங்கிரஸ் ஆட்சியில எண்ணெய் பத்திரம் கொண்டாண்டாங்க, அந்த எண்ணெய் பத்திரத்தை நாங்க அடைக்கிறோம் ஒரு பச்சை போய் சொல்வீங்க. எண்ணெய் பத்திரங்கள் வாஜ்பாய் அவர்கள் ஆட்சியில கொண்டாடப்பட்டது. 9,000 crore அது கொண்டாந்தாங்க. அப்ப காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிகிறப்ப 1,34,423 கோடி ரூபாய் தான் எண்ணெய் பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தன. அதுல 2 பத்திரங்கள் மட்டும்தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. 2015 ஒவ்வொரு பத்திரமும் 1,750 கோடி, 3,000 கோடி. அப்ப 1,30,30,923 கோடி ரூபாய் தான் எண்ணெய் பத்திரங்கள் உங்க பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் சொல்லுது. அப்ப நீங்க 3,000 கோடி தான் கட்டியிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் வட்டி மட்டும் தான் கட்டியிருக்கீங்க. அப்ப மீதமுள்ள 3,88,500 கோடி ரூபாய் எங்க போச்சு நான் கேட்க விரும்புறேன். எதற்கு சாதாரண மக்கள் மீது வரி போடுகிறீர்கள்? இதுவே மக்கள் இருந்து கொள்ளையடிச்ச காசு தான். அந்த கொள்ளையடிச்ச காசை மக்களுக்கு திருப்பி தராம அந்த பணம் எங்க போகுது? 2020 மட்டும் கார்பரேட்டுகளுக்கு, உங்கள் நண்பர்களுக்கு, பெருமுதலாளிகளுக்கு 1,45,000 கோடி ரூபாய் கார்பரேட் கடனா கொடுத்திருக்கீங்க. அந்த கடன் எல்லாம் கார்பரேட் வரி தள்ளுபடியா இருக்கு. அதெல்லாம் திரும்பி உங்களுக்கு எலக்ட்ரல் பாண்ட், தேர்தல் பத்திரங்களா வருது. அந்த பத்திரங்கள் பாஜகவுக்கு, எதிர்கட்சிகளின் ஆட்சியை கவுக்க பயன்படுது. சாதாரண மக்கள் அரிசிக்கு, பருப்புக்கு, பாலுக்கு போராடுறாங்க. ஆனா நீங்க எம்எல்ஏக்களுக்கு 100 கோடி, 200 கோடி, 300 கோடின்னு விலை பேசுறீங்க. இதெல்லாம் சாதாரண மக்களை உறிஞ்சி வருகிற ஒரு ஆட்சி என்பதை நீங்கள் மறந்து விட வேண்டாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை உச்சத்துல இருக்கு. நீங்க ஜப்பான்ல 4.4% வேலைவாய்ப்பின்மை, ஜெர்மனில 6.9%, இஸ்ரேல்ல 8.8%, பாகிஸ்தான் 9.4%, நேபாள் 9.5%, அமெரிக்கா 9.6%, இலங்கை 26.1%, இந்தியா 28.3%. இதற்கெல்லாம் நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும். இதையெல்லாம் எதிர்த்து நீங்க போராடினால் எதிர்கட்சிகளுக்கு, காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் நீங்க அமலாக்கத்துறை அனுப்புவீர்கள். உங்கள் அமலாக்கத்துறைக்கெல்லாம் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம். இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை நீங்க பகல் கொள்ளையை நடத்திக்கிட்டு விலைவாசி உயர்வுக்கு போராடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. 27 கோடி மக்களை மன்மோகன் சிங் அரசு வறுமையிலிருந்து வெளியே எடுத்தது. நீங்க 23 கோடி மக்களை வறுமையில தள்ளியிருக்கீங்க. அதன் மேல விலைவாசி உயர்வு வேற. இந்த விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்துங்கள், ஜிஎஸ்டி வரியை திரும்ப பெறுங்கள், இல்லை என்றால் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு போங்கள். நன்றி. Thank you. Sri Jaydev Gallaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on this very important subject. Please. Sir, I hope my time starts now. Yeah, please. Sir, although it's within the purview of the finance minister, and she will be responding at the end of this discussion, I feel that if the Honorable Consumer Affairs Minister can also intervene in the discussion and apprise the House on what his price monitoring division in particular and his ministry in general has done to monitor, control and contain prices of essential commodities, it would definitely add value to this discussion, sir. Sir, I would like to thank the Honorable Speaker for permitting me to take up the discussion on price rise, which is really hitting the common man. It is a double whammy for the poor and the middle class. First, they suffered due to the pandemic, and now the skyrocketing of essential commodity prices. Running inflation and hike in fuel prices are adding fuel to the fire, sir. Sir, I hope that manthan of this debate will give Amrit in the form of suggestions, and I'm confident that the Honourable Finance Minister and Consumer Affairs Minister would take them in good spirit and act on them to rein the prices of essential commodities, which are really pinching everyone, sir. I tried to analyze with my limited knowledge the main reasons behind the rise in prices of essential commodities and found unabated increase in the price of petrol and diesel are the main reasons, followed to some extent by the Russia-Ukraine armed conflict. It is not just the common man, but even small businesses like restaurants, food joints, hotels and others that are also suffering. There is substantial increase in prices of fuel, vegetable, chicken, edible oil, fruit, gas, etc. And small-time restaurants cannot increase the price of food items. If they do, they lose customers, and if they don't, they're incurring losses. Such is the situation, sir. They are in a paradox. So for all these ills,
I feel the only solution is to bring the petrol and diesel under the purview of GST, sir. This is my first suggestion to the Honourable Finance Minister. Sir, inflation is hovering more than 7%, much more than the RBI's threshold limit of 6%. For many months now, the CPI has been hovering around 8.5%, and the WPI registered 16% in May. The inflation is nothing but taxation without legislation, sir. I agree with the Finance Minister that price is a global phenomenon, and India cannot be insulated from this. I also agree to some extent when the Finance Minister says that the Russia-Ukraine conflict also disrupted supply chains and resulted in increase of prices. This is true, but at the same time, inflation is majorly caused due to two reasons. One is demand pull inflation, and the other one is cost push inflation. The former can be controlled with reducing money supply or increasing prices through taxation. But when it comes to the latter, the measures needed are to increase the supply to meet the demand, which is not happening. And with floods in almost every part of the country, this will further worsen in the coming days. I would like to know from the Honourable Finance Minister the details of monetary, fiscal, administrative and price control measures taken by her and the RBI to control the inflation. This is my second point, sir. Sir, my next point is on containing retail prices. As per the existing system, retail prices are fixed by market forces, and people think that the government has a limited role to check spike in an unacceptable price rise. This is not true, sir, not fully true. Look at the legal metrology packaged commodities rules. It has a provision to fix the retail price of essential commodities if the prices of which go up, and now retail prices have shot up abnormally. It is not applicable to just packaged commodities, but also applicable to loose items sold in retail market. So I suggest the Honourable Finance Minister and also Consumer Affairs Minister to take proactive steps and fix the retail price for essential commodities for a certain period of time in the interest of consumers. Sir, I just have two more minutes and I'll conclude, sir. Sir, vulnerable sections of the society are suffering with high prices of commodities right from vegetables, pulses, oil, milk and whatnot. But to rein in high prices, we have one more mechanism, that is market intervention system, sir. The objective of this scheme is to intervene and to stabilize the prices in the market and to ensure that shortages do not adversely impact the consumers. So the House would like to know, and the country would like to know, what interventions the Government of India has made through the market intervention schemes to stabilize prices and whether such initiatives have given good results. Sir, it is not just the market intervention scheme. We also have the price stabilization fund to tackle inflationary trends. So what the ministry has done to implement this to deter speculative and hoarding of essential commodities may also kindly be explained to the House. The next point I wish to make is relating to GST imposed on curd, buttermilk, lassi, atta, rice, etc. from the 18th of this month. Sir, you know that the GST collections are breaking records and giving huge revenue to the government. By imposing 5% on these items, how much extra could we possibly earn, sir? Secondly, look at the message that we are giving to the poor by imposing GST on these items to garner a few crores of rupees, sir. So I appeal to the Honourable Finance Minister and to the government to remove the GST on packaged or pre-packaged items, which will give a sigh of relief to the common man. Fine. Oil is also an essential item in the kitchen, sir, whose prices have also gone up. And to address this, the Government of India has allowed duty-free import of 20 lakh tons of crude soybean and crude sunflower. Yes. I feel this quantity is not enough, sir. Hence, I request for increasing the quantity by 20 lakh more tons with duty-free, which will further soften prices of edible oil in the country, sir. Sir, my last point, I've seen in some reports recently that says that India has 0% chance for recession, sir. Sir, with the global recession already underway in some regions, and which is quickly spreading to other parts of the world, how will India be immune to such a global recession may kindly be explained, sir. Thank you. If we are not immune, what is the financial impact on India, and what are we going to do to prepare for this? And how will this global recession impact the inflation in India further? Thank you, sir, for giving me the time. And I look forward to the response from the Finance Minister. Thank you very much. Now, next, Sri A.M. Arif. It is decided to conclude the debate by 6:30, 6:45. The Minister has to reply. So all the members are requested to confine. Pardon? No. This is the direction from the Honourable Speaker. Arif. Sir,